Good afternoon, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? Good afternoon. Any questions from what we discussed yesterday? Okay. So in case no, so कल हमने ये discuss कर लिया था, and then we also discuss about this discounting cash flow, which is DCF. Okay. So now, what this means? This means अगर हमें DCF model लगाना है, in DCF model we need two things. One is cash flow, and second is discounting. ये कल हमने conclude किया था. So I will take it forward from there. So last time, any questions on this till this point? Okay. Now, when you say discounting, so yesterday we discussed what is discounting. Discounting is present value is equal to future value divided by 1 plus r raised to the power t. ये जो r होता है, this is called as discounting rate. Why this is called as discounting rate? Because this is the interest rate at which you do discounting. The discount rate is the interest rate at which you do discounting. And discounting क्या होता है वो हम कर चुके हैं from FV to PV. ठीक है, यहाँ तक कुछ query है तो पूछिए. Which means one of the important part of DCF model, अगर हमें डिस्काउंटिंग करना है तो हमें R पता होना चाहिए. ठीक है. So what we'll do today, we'll start working on how do you calculate discounting rate. This is what will be the agenda for today's session. How to calculate discounting rate. ये समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं और क्यों करने वाले हैं. हमने DCF कल बिल्ड किया, मॉडल बिल्ड किया, मतलब we came to buy it is called as DCF, and then उस DCF के दो पार्ट्स हैं, कैश फ्लो एंड डिस्काउंटिंग. मैं सेकंड पार्ट पे भी स्टार्ट कर रहा हूँ. डिस्काउंटिंग इज कि आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हो, और वो डिस्काउंटिंग जो आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, दैट इज डन एट इंटरेस्ट रेट. At the interest rate is nothing but called as discounting. So we need to calculate we need to know how to calculate a discounting rate, and that is what we will be covering in today's session. Okay. Now, as an investor, so let me what is the discounting rate that you use? So now, if I go to bank and invest 100 rupees for next 2 years, and interest rate is 10%, what I will get after 2 years? हाँ जी,
So Akansha, in this, we need to calculate present value or we need to calculate future value? The question which is highlighted in yellow. We need to calculate present value or future value? Future value. Future value. Correct. So my present value given है 100 rupees, time given है 2 years, and मुझे rate given है 10%. So my future value is what we need to calculate. So my future value is what? This into 1 plus Hanji, any doubt in this? Sorry. This should be raised. Okay. Now, if you see this carefully, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 plus r raised to power t. करेक्ट? दिस इज द फॉर्मूला. और इसी को मैं रीअरेंज करता हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है, which means present value is equal divided by 1 plus r raised. Is everybody with me till this point? सेम फॉर्मूला को रीराइट किया. अब यहाँ पे आर क्या है? अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है तो व्हाट इज द आर दैट यू टेक? कैन आई से दिस आर इज नथिंग बट योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? हाँ ये ना. Yes, sir. Sorry, Isha, somebody was saying something. So I heard one yes and I heard some question which I couldn't gather from someone else. Any questions on this? Go ahead. Won't it be rate of interest rather than rate of return? Akash, your voice is not very clear. You need to speak a little closer to the mic. Hello. Yeah, go ahead. So I was asking, won't it be rate of interest instead of rate of return? रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाँ, तो रेट ऑफ आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप 10% क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? बिकॉज 10% इंटरेस्ट रेट एफडी में है. लेट्स अज्यूम अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड नहीं होता तो वहां पे आपका आर क्या होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आने वाला है? फॉर दिस एग्जांपल व्हिच इज एफडी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट. बट लेट्स अज्यूम ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है. नाउ यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज इन इक्विटी स्टॉक. अब इक्विटी स्टॉक में तो कोई कमिटमेंट नहीं होता ना वो कितना पैसा मिलेगा. करेक्ट? तो अब आपके लिए आर, डू यू एग्री कि अब आर इज व्हाट इज दिस? हाँ या ना? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इतना मिल जाएगा? वही तो आप आर लो के लिए होगे ना इस कैलकुलेशन में. Yeah. So that is why I've written expected return rather than saying actual rate of interest, because actual rate of interest will be only available in a very simple example like FD. But when you will move to a much more equity oriented investments, then there is no rate of interest defined and we will be working on entire calculation of values will be on an expected rate of return. Hanji, any other doubt? ठीक है. Now let's think it from this perspective कि अगर बैंक ने आपको 10% इंटरेस्ट पे करने के लिए एग्री किया है फॉर दिस 100 रुपीज,
ठीक है. So if bank has agreed to pay 10% to you for 100 rupees, can I say that this 10% is kind of a cost of capital for a bank for this 100 rupees? हाँ ये ना, बैंक के लिए तो कॉस्ट हो गई ना 100 रुपीज. 100 रुपीज के लिए 10% तो कॉस्ट है ना बैंक के लिए. Yes, sir. So can we say if from an investor perspective जो उसका रिटर्न होता है वो from a company perspective और from bank perspective cost of capital हो जाता है. Yes, sir. So same example अब equity का लेते हैं. So let's say we have invested into Reliance shares. ठीक है, and your expected rate of return from Reliance shares is let's assume 14%. मैं सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट अभी के लिए let's assume 14%. So is this not a cost of equity for Reliance? Yes, sir. क्योंकि अगर Reliance आपको 14% जनरेट नहीं कर पाता है तो probably over a period of time you will exit from Reliance and move to some other stock. So to ensure that you continue to stay invested, Reliance has to meet this expectation by generating that return for you, which is nothing but a cost for them. Yeah. Yes, sir. And this concept is called as cost of capital. तो मैं इसको अभी भी cost of capital ही रखता हूँ. This concept is called as cost of capital. Any doubt in this? So the way you need to understand is this. So जो discounting rate होता है, discounting rate is my expected, sorry, let me take different color. Yeah. So this discounting rate is nothing but this expected rate of return. Or the expected rate of return is what? The expected rate of return is nothing but is your, will be computed from, or is something which is cost of capital. So तीन स्टेप, तीन लिंकेज मैंने आपको बताई है. डिस्काउंट रेट को एक्सपेक्टेड रिटर्न से कैसे लिंक किया, देन एक्सपेक्टेड रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैसे लिंक किया. Is everybody clear with this three concepts and how these are interlinked to each other before we move further? Any questions on this? Answer. Actually, ये expected rate of return नहीं समझ आ रहा. How is it related to discounted rate? So what is discount rate? Discount rate is the interest rate which you use for discounting. ये clear है आपको? Yes, sir. वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? उस इन्वेस्टमेंट पे जितना आपको रिटर्न मिलने वाला है. In future, yes. ठीक है. ना आप दो सिनेरियो हो सकते हैं. फर्स्ट सिनेरियो लाइक एन एफडी जहां पे वो इंटरेस्ट रेट क्लियरली डिफाइंड है, वही मिलेगा जो लिखा हुआ है. Yeah. सेकंड सिनेरियो कुड बी लाइक एन इक्विटी जहां पे इंटरेस्ट रेट कोई कमिटेड नहीं होता है, कोई डिफाइंड नहीं होता है. Yes. So broadly what does it mean? It means कि आपका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिलने वाला है, जो रिटर्न आपको मिलने वाला है. दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन हियर एज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न. जब एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपने एफडी किया यू एक्सपेक्ट 10% बिकॉज आपको पता है जब एफडी ने एफडी ओपन किया था वहां पर 10% लिखा हुआ था. लेट्स से यू इन्वेस्ट इनटू रिलायंस शेयर्स. व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू रिलायंस शेयर्स यू डिड सम कैलकुलेशन, यू एक्सपेक्ट कि यहाँ से 14% तो मिल जाएगा. And then you invested, so you will do calculation basis 14%. But sir,
अगर इक्विटी पर्सपेक्टिव में देखें तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो फिर कस्टमर का होगा, कंपनी के पर्सपेक्टिव पे रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? Correct, agree. This expected rate of return is from an investor perspective. Agree. Is from an investor perspective. Agree. यहाँ तक आप क्लियर हो? सेकंड स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। अब अगर लेट्स अज्यूम बैंक आपको 10% रिटर्न दे रहा है, फॉर यू इट्स एन एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट बैंक के लिए वो क्या कॉस्ट नहीं है? यस। Hence this is cost of capital, correct? कि बैंक ने वो 100 रुपीज रेज करा है, वो 100 रुपीज बैंक के लिए कैपिटल हो गया, और उस कैपिटल की जो कॉस्ट है वो तो 10% है। So from bank और from issuer perspective, अगर हम रिलायंस शेयर्स की देखेंगे तब फ्रॉम बैंक परस्पेक्टिव तो ये कॉस्ट ही हो गया ना, जो आपको वो रिटर्न दे रहे हैं। जब आप कुछ कमाते हो आकांक्षा, व्हेन यू अर्न, व्हेन यू गेट सम रिटर्न, you for the person who is receiving it उसके लिए रिटर्न है, बट just the person कहीं से तो वो आ रहा होगा ना, जहां से वो आ रहा होगा उसके लिए तो कॉस्ट ही है। For example, salary. When you receive salary, for you that's a return of working for that month for your company, but for company it's a cost, correct? Yeah. So same चीज हम यहाँ पे लगा रहे हैं, if banks or the company gives you some return, either interest or either a dividend, वो जिसने दिया है उसके लिए तो कॉस्ट ही है ना। और ये कॉस्ट किस चीज की है? जो उसने आपसे कैपिटल लिया था या जो उसने आपसे फंड्स लिए थे, उस फंड्स की ये कॉस्ट है जो आपको पे कर रहा है। Sir, any doubt in this? No. So one question. Sir, go ahead. So for company's perspective, expected rate of return फिर क्या मानेंगे, या फिर it will only be limited to investor perspective? So company के लिए जो cost of capital है, वो cost of capital would be equivalent to the expected rate of return of the investor. एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से मैंने कंपनी स्टार्ट किया और आपसे मैंने कहा आकांक्षा कैन यू इन्वेस्ट इनटू शेयर्स ऑफ माय कंपनी, इक्विटी ऑफ माय कंपनी। मैंने कहा ठीक, आपने कहा ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट एक सिंपल डेट लेते हैं पहले। सो मैंने आपसे आकांक्षा कहा कि मुझे प्लीज लोन दे दो फॉर 5 years ऑफ 10 लाख रुपीज। आपने कहा ठीक है, आई कैन गिव यू लोन। एंड से सपोज मैंने आपसे कहा एट व्हाट रेट यू विल गिव मी लोन, आपने बोला 11%। सो यू विल गिव मी लोन फॉर 10 लाख रुपीज फॉर 5 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ, तो आपका जो रेट है वो 11% है। So every year when I'm paying you this 11%, is this not cost for me? Is this not the cost of capital that I've borrowed from you? Yes. So अब मेरे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? जो आप जिस रेट पे मुझे दिया है वही तो मेरे लिए कॉस्ट है। अच्छा, आपने जो मुझे लोन दिया, एट द एंड ऑफ द ईयर आप कितना रिटर्न मुझसे एक्सपेक्ट करोगे? 11%। Yes, 11%. तो इसलिए मैंने इसको बोला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और मैंने इसलिए बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट कंपनी के लिए वो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी को जनरेट करना पड़ता है और देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट हो जाती है। समझ मैं ये पूछ रही थी कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कंपनी पर्सपेक्टिव में कुछ माना होता है या फिर इट्स ओनली लिमिटेड टू इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव? Like, is there any expected rate of return for the company itself or no? It will always be वो निकालना एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमेशा इन्वेस्टर के साइड से होगा ना। रिटर्न किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? इन्वेस्टर के लिए करते हैं ना। कंपनी भी करेगी तो कंपनी इन्वेस्टर के लिए करेगी ना, कि अगर कोई इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, व्हाट how much he or she will expect from me. So I would always calculate expected return from the investor perspective. Okay.
सो लेट्स अज्यूम सैलरीज है, सो सैलरीज अगर आप एम्प्लॉयर से पूछोगे तो वो बहुत कम पे करना चाहेगा, बट दैट इज नॉट द वे इट वर्क्स, करेक्ट? दे ट्राई एंड मीट योर एक्सपेक्टेशन। अगर उनको पता है कि मेरे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करूंगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट, इन टर्म्स ऑफ बोनस, in a long run, so these top performing employees will leave the organization and go to some other company. यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स आकांक्षा, आपने मुझे 10 लाख रुपीस दिए एंड 11%, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 11% एक्सपेक्ट करो, और मैंने कहा नहीं यार अच्छा बिजनेस नहीं हुआ तो 5% ले लो, will you feel happy? No. Then what will you do? You will say, boss, give me my money and I will go to some other company for investment because I expected 11, you are not giving me 11. Yes or no? Yes, sir. For me to retain, for me to ensure that you continue to retain your investment into my company so that I can use that capital, I need to generate 11% which meets your satisfaction and expectation. तभी आप ऐसा वहां पे कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज आप विड्रॉ कर दोगे। तो मेरे लिए वो कॉस्ट क्या हो जाएगा? माय कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एटलीस्ट उतना तो जनरेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बिफोर आई गो टू इक्विटी? ये मैंने डेट साइड से समझाया था, विच इज मोर इजी बिफोर आई गो टू इक्विटी। विदाउट आकांक्षा, आपको एनीबॉडी एल्स एनी क्वेश्चन ऑन दिस सो फार? ठीक है, so let's take an example of equity now. Now same example, I suppose if I tell you, okay, invest 10 lakh rupees in my company, but now invest in equity form. Now I will not commit anything कि मैं आपको कितना डिविडेंड दूंगा, कोई कमिटमेंट तो होता नहीं इक्विटी में। बट आपने जब इन्वेस्ट किया, आपने कुछ अपना इंटरनल कैलकुलेशन किया और आपने इन्वेस्ट किया कि ठीक है यार, आई थिंक निशांत की कंपनी से मुझे 14% तो मिल जाएगा। So this becomes your expected return, correct? Not the committed return. Can't share with me. Yes, sir. ठीक है, अब अगर एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने 14% जनरेट करके आपको दे दिया, what will you do? You will feel satisfied? You will continue to invest into my company next year? Yes, continue to invest. If I do not generate 14%, then probably you have two choices. If you're long term investor, so चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर नहीं अगले साल आ जाएगा और अगले साल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा फर्स्ट ईयर का भी. So that is something that is one way an investor can think, or the another investor which is little short 15% एक्सपेक्टेशन नहीं है, चलो निकलो यहाँ से. Yeah, both ways. Yes, so this is what we're saying. अगर मुझे आपको रिटेन करना है तो मुझे ये जनरेट करके आपको देना पड़ेगा लॉन्ग रन में, एंड हेंस फॉर मी इट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ दिस कैपिटल कुड बी डेट, कुड बी इक्विटी, बट दोनों ही केस में प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट रिमेन्स है कि जो इन्वेस्टर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो रिटर्न आपके लिए कॉस्ट हो जाता है, एंड दैट इज यूज्ड एज अ डिस्काउंटिंग रेट इन दीज कैलकुलेशन. Akansha, clear? Yes, sir. Anybody else? Any other question, doubt till this point?
Hello, am I audible? Yes, sir. Hello. Okay. So yeah. So are we clear with this linking of discount rate to expected return and then linking expected return to cost of capital? Are we good with this? Before we get into the calculation part of this. Okay. Now we'll start with first cost of debt. So as I said, capital में क्या क्या होता है? Capital has two parts. So one is a debt part and second is the equity part. इसी के लिए हमारे पास होता है cost of capital. जो टोटल कैपिटल की कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं. जो डेट की कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं और जो इक्विटी की होती है उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं. इसको के ई से डिनोट करते हैं. इसको के डी से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा क्या करते हैं. Are we clear with this? Now let's start with the calculation of cost of debt. So first हम cost of debt करेंगे. So दो कंपनीज देते हैं, कंपनी ए एंड दोनों कंपनी का, जिसका कंपनी का इक्विटी 100 है, इसका डेट भी 100 है और वो डेट का इंटरेस्ट रेट 10% है. ठीक है, इस कंपनी का 100 है एंड इसका डेट 0. तो टोटल कैपिटल दोनों का 200 हो गया. क्लियर है यहाँ तक? दोनों कंपनी में टोटल कैपिटल जो है वो 200 रुपीज है, बट कंपनी ए में 100 रुपीज इक्विटी 100 रुपीज डेट है एट द रेट ऑफ 10% एंड द कंपनी बी has only equity, no debt, but the total investment in both the companies remains same. And without question. ठीक है. Now let's assume दोनों कंपनी का EBITDA सेम है. ठीक है, और लेट्स assume दोनों कंपनी का EBIT सेम है. दोनों कंपनी का सेम इन्वेस्टमेंट है, सेम सब कुछ है. दोनों कंपनी का EBIT लेट्स assume we take it again same as 100. अब इसका कंपनी का लेस इंटरेस्ट, इस कंपनी का इंटरेस्ट कितना होगा? 10% ऑफ 100 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज का लोन है, और इसका इंटरेस्ट कितना होगा? 0. पीबीटी कितना हो गया? दिस माइनस दिस एंड यहाँ पे सेम. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछिए. क्या कांशा? The cost What? of debt, like, is it necessary for the company to calculate? Or यस. अगर मेरे को मुझे कॉस्ट ऑफ डेट नहीं निकालूंगा तो मैं डिस्काउंट रेट कैसे निकालूं? और मैं डिस्काउंट रेट नहीं निकालूंगा तो मैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करूं? sorry, I'm not able to frame my question. Give me 1 second. ओके. Actually, जिसमें if the company has zero debt
and obviously there will be no cost for debt. So will there be any kind of discounted rate of return for that? Sorry, come again. Like when any company has zero debt, Uh, so obviously there will be no cost for debt in that company. So will it be possible that they would, they'll be calculating any kind of rate of return for themselves, or obviously there will be zero discounted rate for them? no, so if a company does not have any debt, then the cost of debt would be zero. But in that case, the company will at least have equity. This is what I've done for company B, correct? Then we'll calculate cost of equity जो मैं आपको सिखाऊंगा, and then through that we'll get our cost of capital. अगर कंपनी में कैपिटल ही नहीं है, जीरो है, तो cost of capital zero होगा, which is practically impossible, correct? For a company to have, at least you will have capital. Either it will come from debt or either it will come from equity and debt combination. That's something that we played in both the scenarios. Okay. Does it answer your question, Akansha? Yes, sir. Okay. Anybody else? Any other question? Okay. So now let's see this carefully now. Now suppose tax. PBT से हम tax minus करेंगे, लेकिन tax rate 30% है. तो यहाँ पे हम 30% टैक्स पे कर रहे हैं 90 रुपीज का, और यहाँ पे हम टैक्स पे कर रहे हैं 30% 100 रुपीज का. Hence my PAT is this minus this. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए. Okay, now if you see this carefully, both the companies have exactly same EBIT and both companies follow a 30% tax rate. Still, company A is paying only 27 rupees in tax, whereas the company B is paying 30 rupees as a tax. So company A is saving 3 rupees in tax, in spite of the fact everything is same except that company A has something from debt and B does not have anything from debt. Yes. So what does this mean? This means when you take debt, you pay interest, and when you pay interest, you save some tax. Yeah, no, okay, with numerical calculation. Yes, sir. Oh, Yeah, Kansha. In case you're asking anything, go ahead. is it what saving minimal amount of tax over here, or not? Like having zero debt is much better. नहीं समझा, दोबारा बोलो. Like company A is saving some kind of tax by having the whatever amount of debt they're having, and company B is having zero debt, but Correct. obviously they pay tax. So is it worth saving the tax by taking debt or not? आप बताओ. If you are a company, would you like to pay more tax or would you like to pay less tax? So sir, even if I pay less tax, so obviously I'll be having cost of debt with me. तो Correct. उसमें ये तो फायदा कैसे हो रहा है, मतलब there's कहते हैं, आते हैं उसमें. We'll come to that. आप पाक करो, स्पेशल में पे नोट करके we'll come to this. This will get addressed. But at least इतना अभी तक यहाँ तक हम clear हो गए कि I'll let you know in case any doubt on that, कि when you take loan and you pay interest, you save some tax. Is this what you should do or not? Is that that next part is yet to be done?
अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो आई विल सेव सम टैक्स. इज दैट पार्ट क्लियर? Yes. ठीक. अब मैं कंपनी ए के लिए आपसे पूछता हूँ. फॉर कंपनी ए, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट? Ten. करेक्ट आंसर. आप कुछ पूछ रहे थे? No, so I was just saying that cost of debt for company A would be 10. करेक्ट. सो कॉस्ट ऑफ डेट फॉर कंपनी ए इज 10. बट ध्यान से देखो, क्योंकि आपने ये 10 रुपीज पे करे, इस 10 रुपीज पे करने की वजह से आपने 3 रुपीज सेव भी तो करे हैं. तो सेविंग इन टैक्स कितना है आपका? 3 रुपीज. यहाँ पे दोनों 0 0 चल रहा है. नेट कॉस्ट ऑफ डेट कितना हुआ? 7 rupees. Is everybody with me till this point? I'm paying 10 rupees to someone. Because I'm paying 10 rupees, I'm able to save 3 rupees in some other payment. Hence, net मुझे cost कितना पड़ा? 7 रुपए. Yes. So, can I say this 10 rupees is pre-tax cost of debt? टैक्स का एडवांटेज लेने से पहले कॉस्ट ऑफ डेट, और इसको अब मैं पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बोल सकता हूँ. कंपनी बी के लिए सब कुछ 0 ही चल रहा है. हाँ जी, ये देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. और दोनों में डिफरेंस क्या है? जो भी आपने टैक्स में सेविंग किया वो नेट ऑफ कर दो. हाँ जी, कोई डाउट यहाँ पे? Guys, any question on this? Are we comfortable with this, please? Pre-tax cost of debt and post-tax cost of... I will still explain how do you calculate, but at a conceptual level, are we clear with these two terms? Yes, sir. Pre-tax cost of debt is that cost of debt from which you are yet to deduct the tax advantage, which means cost of debt without tax advantage is called as pre-tax cost of debt. And when you include your tax advantage, and then you arrive at a final cost of debt, that is called as post-tax cost of debt. ठीक है? तो इसको पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को लिखते हैं के कैपिटल डी, और प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को लिखते हैं के स्मॉल डी.
नाउ अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं, सो लेट्स अज्यूम इफ आई से, कैन आई से pre-tax cost of debt is equivalent to interest rate? Can I say that? And let me interest rate को हम I लिख लेते हैं. Are you comfortable with this? Pre-tax cost of debt is equal to interest rate, जो आपके लोन पे इंटरेस्ट रेट होता है. So is it different from rate of return? सेम ही है ना. सो रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना रिटर्न मिलेगा, जितना आप इंटरेस्ट पे, जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ वही तो आपका रिटर्न होगा. हम डेट के लिए बात करें, डेट में रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट सेम है, बट इक्विटी में डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इंटरेस्ट रेट लिखा. Okay. And my post-tax cost of debt is equal to pre-tax cost of debt into 1 minus T, where T is your tax rate. चेक करते हैं. मेरा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 7 रुपीज ऑन 100 रुपीज. तो टेक्निकली 7% हो गया ये. मैंने 7 रुपीज पे करे 100 रुपीज के ऊपर. हाँ ना. Yes, sir. Yes, sir. Finally, you paid 100 rupees, sorry, 7 rupees on the debt of 100 rupees, and hence it becomes 7%. Yes. ठीक है. Then मैंने ये फॉर्मूला लेगा, इस फॉर्मूले में चेक करते हैं आता है कि नहीं आता. मेरा इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है. सो यहाँ पे इस इक्वेशन में मेरा ये कितना हो जाएगा, 10%. प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 10% है हमारा, विच इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट. तो मेरा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगा, 10% इंटू 1 माइनस टी. टी क्या 30%, तो 0.30 लिख लेते हैं. ये भी 7% आ रहा है. हाँ या ना. 1 minus T is, sorry, I did not get this. 1 minus T is T is that? your tax rate. Tax rate, yeah. Same answer आ रहा है. And it is 7% and this 7%, same answer. Hence, we can use this formula. ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. Yes. Are we comfortable with this, guys? This post-tax cost of debt is equal to pre-tax cost of debt into 1 minus T, and this is the formula of post-tax cost of debt. हमने ये derive कर लिया, हमने validate भी कर लिया, दोनों जगह से 7% आंसर. ठीक है, अब कुछ नोट करना है तो कर लीजिए before we do some calculations around this.
एग्जाम्पल प्लीज नोट कर लीजिए, ये जो मैंने आपको कराया है ये स्लाइड्स में नहीं मिलेगा आपको, so in case you need to refer in the future, note down, otherwise I'll leave it to you. Answer. Okay. ठीक है, चलिए let's do a couple of examples so that you get comfortable with this. Calculate KT and KT. करिए calculate. First question try करिए 5 minutes and then I will solve this for you. Done? Should we now solve? Should I solve this now? You're still working on this. Done? You need more time? What is the status, guys? Minutes more needed. Okay. So pre-tax cost of debt आपका कितना होगा? 10%, sorry 12% हो जाएगा वो, जो इंटरेस्ट रेट होता है वही हो जाता है. और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगा आपका? 12% इंटू 1 माइनस 0.33.
Is this good? Are we comfortable with this? Okay. So this is the first part of costs of debt. So we're done with this piece now. Okay. Surely. Now we'll go to cost of equity. Okay. So now cost of equity may we need to understand some certain concepts first. So what is risk? Risk is uncertainty. There are two types of risk. First is systemic risk, and you have unsystemic risk. Now, systemic risk is which is macro, country or economy-wide issue, or industry-wide issue. For example, this pandemic. Now, this is a systemic risk. आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा है. So every company is struggling. Most of the companies are struggling, and hence share price of these companies are fluctuating. Correct? So that's a systemic risk. Unsystemic risk होता है, which is micro. Which is company specific issue or a problem. वो unsystemic risk होता है. ठीक है. So for example, let's assume आपने product launch किया and the product is not accepted by the customers, और वो product का आपको feedback अच्छा नहीं मिल रहा है. So that is a problem in individual company, which is unsystemic risk. It's not a economy के सारे products बेकार हो गए. अभी clear with systemic risk and unsystemic risk? Yes, sir. Okay. Systemic risk is measured by a concept called beta. Beta is used to measure systemic risk. Now, what does that mean? Let's understand that. So, if the beta is, let's assume, 0.7, what does this mean? Suppose beta of the stock A. Suppose beta of the stock A is 0.7. What does this mean? This means if market, अब market कोई भी ले सकते हैं, suppose Nifty है. If Nifty goes up by 1%, then stock A will go up by 0.7%. Or if Nifty goes down by 1%, then stock A will go down by 0.7%. This is what the beta means. बीटा क्या बताता है आपको कि जैसे सिस्टमिक रिस्क है, सिस्टमिक रिस्क इज मार्केट में जो मूवमेंट होता है, जो अगर मार्केट में 1% फॉल हुआ है तो माय स्टॉक विल गो डाउन बाय 0.7%. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी मीन स्टॉक प्राइस मूविंग अप एंड डाउन, मार्केट में अगर 1% वॉलेटिलिटी आती है तो उसका मेरे स्टॉक पे 0.7 इम्पैक्ट पड़ता है. अगर मार्केट नीचे जाती है 1% से तो मेरा स्टॉक 0.7 नीचे जाता है. अगर मार्केट ऊपर जाती है 1% से मेरा स्टॉक 1% से 0.7% ऊपर जाता है. दिस इज कॉल्ड एज बीटा. Any doubt? This is a very important concept from an intro perspective. Any doubt in this, please पूछिए.
is the numerical value for beta, or is it calculated 0.7 or whatever is going up and down? सो बीटा इज कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेशन बाद में सिखाऊंगा, बट अभी के लिए मान के चलो अगर आपको बीटा कैलकुलेट करने के बाद स्टॉक ए का 0.7 आया तो व्हाट डज इट मीन वो बता रहा हूं। और 0.7 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आगे करेंगे हम। Okay. And this beta 0.7 Akansha is not that always it will be 0.7. So for stock A it could be 0.7, for stock B it could be 0.2, and it could vary from stock to stock. Okay. So basically, beta calculation is different than this numerical value. वो बीटा कैलकुलेशन करके ही तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। Then how is it different for different stocks? If वही calculation होती है same आना है। नहीं बट फॉर्मूला सेम है, बट उसके जो वेरिएबल्स होंगे वो तो अलग अलग होंगे ना, उनमें जो डेटा पॉइंट्स जाएंगे वो तो अलग अलग होंगे ना। उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज पुट करोगे वो हर स्टॉक के लिए अलग अलग होगी ना। Okay. करेंगे बीटा कैलकुलेशन करेंगे। और कोई डाउट इसमें अदर देन बीटा कैलकुलेशन? Okay. So in case no, so let's take another example. Now suppose if the beta of the stock A is minus 0.3, ये देखिए important है। If the beta of the stock is minus 0.3, minus value है यहाँ पे. So what does this mean? If Nifty goes up by 1%, then stock A will go down. Negative correlation है। उस नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे लोग। And when stock goes down by 1%, stock A will go by 0.3%. 0.3%. समझ आया बीटा? So beta is the kind of a correlation between stock and market, which is that's assume Nifty or Sensex whatever. अभी दोनों एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल 1 बीटा का, एग्जांपल 2 देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। Beta is basically the market volatility of stock. Anji, any question in this concept of beta? Very, very important concept. Please, any questions in this?
मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए, प्लस बीटा माइनस बीटा। या ईशा सर सेकंड पॉइंट को दोबारा समझा दीजिए। So minus wala. Yes. So second example is if your beta is minus 0.3. So what does this mean? Then minus 0.3 है तो वो नेगेटिव, यहाँ पे अब दो चीजें हैं देखो, एक तो नेगेटिव साइन है, एक वैल्यू है। अब नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ, द नेगेटिव साइन मीन्स वो अपोजिट मूव करेंगे। अगर नेगेटिव होता है इसका मतलब अपोजिट मूवमेंट होगा, अगर पॉजिटिव साइन होता है सेम मूवमेंट होगा। ये क्लियर है? और अपोजिट का मतलब अगर एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा एंड वाइस वर्सा। सेम मूवमेंट का मतलब एक ऊपर जाएगा दूसरा भी ऊपर जाएगा एंड वाइस वर्सा। सो नेगेटिव साइन आपको बताता है अपोजिट मूवमेंट होगी। तो ये देखो यहाँ पे स्टॉक ए गोज अप तो ये डाउन हो गया, और कितना ऊपर नीचे होगा वो माइनस ये 0.3 बताता है। सो इफ द मार्केट गोज अप, if the market goes up by 1%, then stock A will go down. It down because यहाँ पे minus sign है. Okay. Go down by how much? 0.3 times. 0.3 times of 1%, which is 0.3%. And is this clear to everyone? Beta. Please, if this get, I understand this is very mathematical and numerical oriented. So please, it's if it's becoming heavy, कि यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, please let me know. Especially if you're not from maths background, or probably might be a little heavy for you. So anything that you don't understand, any query, please feel free. It's okay if you want me to repeat more than a couple of times, that's okay. At any point of time you feel it's getting too heavy, please do let me know. Any doubt in beta? Has everybody understood this concept? Both plus and minus scenario. Last time, any questions in beta before I move further? हाँ, वो calculation मैं आपको कराऊंगा, so we'll do that. Not now. Probably after a couple of sessions, once we get comfortable with the entire use and application of beta, probably then we'll get to the calculation part. So आप उसको कहीं note करके park कर लो and like वो to be done करके. So that is pending. Anything else? ठीक है. Now, so this is one part. Now, suppose you have invested 50 lakh rupees in FD at a rate of 10%, और ये FD आपका SBI में है. ठीक है. Now, if I request you to withdraw this amount and invest in equity shares of my company. यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है?
Yes, sir. How much? What will be your expected return? ये निकालना है हमारे को. हाँ जी. क्वेश्चन समझ आया? यू इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीज इन एफडी. ऑलरेडी आपका एफडी हुआ है जिसमें आपको 10% पर एनम एसबीआई से मिल रहा है. मेरे पास एक कंपनी है जिसमें मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं आपको बोलता हूँ इन्वेस्ट कर दो. आपने कहा सर मैंने तो ऑलरेडी एफडी करके रखा. मैंने कहा एफडी को ब्रेक करो और मेरी कंपनी में लगा लो पैसा, इक्विटी शेयर्स में. तो आप कितना रिटर्न मुझसे एक्सपेक्ट करोगे वो हमें निकालना है. हाँ जी, अब बताइए. एटलीस्ट यू विल एक्सपेक्ट 10%, क्योंकि 10% तो आपको पहले से मिल ही रहा था, करेक्ट, उस फंड्स पे. Yes, sir. Now, for earning this 10%, are you taking any risk, or is this without risk because you've put it into FD like an SPI, which we all know in Indian context is as good as safe? Okay, so are you taking any risk for this 10%? No. ठीक है. Yes. तो ये हो जाता है risk free rate of return. This is called as risk free rate of return, which is RF. जो मुझे पहले से ही मैं कमा रहा हूँ या जो पहले से ही मुझे मिल रहा है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, दैट बिकम्स माय रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. और आर क्यों रखते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको कितना चाहिए मुझसे फॉर यू टू गेट मोटिवेट टू इन्वेस्ट इनटू माय कंपनी. One thing. So can I say your required rate of return would be at least RF plus something? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. कितने लोगों को यहाँ तक समझ में नहीं आया? सिंपल है, मेक सेंस, बिकॉज आपने अगर एफडी में 10% पे आप रिटर्न कमा रहे हो एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क फॉर दैट, करेक्ट. और मैं आपको बोलता हूँ आप वहां से उठ के वहां से पैसा विड्रॉ करके मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो आप मुझसे एटलीस्ट 10% तो मांगोगे. सर मैं तो ऑलरेडी 10% कमा रही हूँ, तो मुझे 10% तो दो प्लीज. मेक सेंस? Yes, sir. नाउ but will you be happy at 10%? Because you know कि जब आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे इक्विटी में, so equity will have high risk, so you will expect high return on this. इसलिए आप कहोगे सर मुझे रिस्क फ्री तो चाहिए प्लस मुझे रिस्क प्रीमियम भी चाहिए. व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम Excuse me, इज sir. या Sir, Kancha is asking something. मैं तो आई कांट हियर यार. Maybe बोलो. voice. आपको सुनाई दे रहा है उसका क्वेश्चन? उसने अनम्यूट किया था तो उसने बोला कि शायद. ओके, आकांक्षा पूछो. ईशा, कैन यू हियर? No, sir. आकांक्षा, Hello. एनी क्वेश्चंस? Sir. या गो अहेड. Sir, I'm asking if ये जो एफडी इसकी हमने विड्रॉ करवाई फॉर शिफ्टिंग इट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर, हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी तो बीच में कटेगा कि नहीं कटेगा? तो फिर उसका रेट ऑफ रिटर्न में कुछ हम ऐड नहीं करेंगे? हाँ तो वो कितना कटेगा? वो 10% पूरा जीरो हो जाएगा ना. वही तो दे रहा हूँ आपको. 10% पूरा वापस ले तो लिया हमने यहाँ पे आरएफ में. सपोज टुडे यू आर इन्वेस्टिंग इनटू एफडी. इफ यू ब्रेक एफडी, व्हाट यू विल लूज? यू विल लूज 10% ना. Hence you will expect at least 10%. हम कट भी होता है तब एफडी ऐसे विड्रॉ करते हैं तो अलग से. अरे कट तब होता है आकांक्षा जब आप वो पैसा वहां पे कंटिन्यू रखो. मैं तो कह रहा हूँ पूरा पैसा ब्रेक करके मेरे पास ले आओ.
कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे हो। वो तब होता है जैसे आपने 5 साल की एफडी कराई, 5 साल की एफडी को आप 2 साल में ब्रेक करते हो, तो आप वो बोल रहे हो कि वो आपको पेनल्टी लगाते हैं। दैट इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू, करेक्ट? आकांक्षा? Yes, yes, yes. हाँ, लेट्स अज्यूम देयर इज नो पेनल्टी। अगर आपने 5 साल की एफडी को 2 साल में ब्रेक किया तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बट ये कि आपने जब एफडी ब्रेक किया तो उसके बाद आपको 10% मिलना बंद हो जाएगा। आकांक्षा? Yes, okay, okay. ओके, अभी देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ रिस्क वाला। सो आपको कितना एक्सपेक्टेशन होगा? आप कहोगे मुझे रिस्क फ्री दो और रिस्क प्रीमियम दो। व्हाट इज रिस्क प्रीमियम? रिस्क प्रीमियम इज द कॉम्पनसेशन फॉर टेकिंग रिस्क, which means if you're taking high risk, high compensation. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Which means जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा उस स्टॉक का, ये वाला जो कंपोनेंट है ये बढ़ता जाएगा। Yes. ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, विल गो बैक टू रिस्क नाउ। लेट्स कम टू दिस। अब जो सिस्टमिक रिस्क होता है, कैन यू डाइवर्सिफाई दिस रिस्क? दिस कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे ये रिस्क आपको इम्पैक्ट करेगा। बट ये जो होता है इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जो अनसिस्टमिक रिस्क होता है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। So diversify in the sense. अवॉइड। सो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी पेंडेमिक में स्टॉक मार्केट्स का जो 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 वोलेटिलिटी है, इफ आई इन्वेस्ट इनटू रिलायंस, whether I invest in Tata, whether I invest into any other company, all companies are suffering from this, correct? They are facing challenges from the pandemic. Yes or no? Yes, sir. So that is what it says, आप उससे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इफ यू इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट यू हैव टू टेक दैट रिस्क। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क इज कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन वन कंपनी, उसके प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है। नाउ कैन यू अवॉइड दैट रिस्क? यस, यू एग्जिट फ्रॉम दैट वन कंपनी, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, यू गो टू सम अदर कंपनी, इसका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। सो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उससे बच सकते हो, अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस। So now, there's a model called CAPM. CAPM stands for Capital Asset Pricing Model. ये नोट कर लीजिए। This model is used for calculating required rate of return for equity. ये कर रहे हैं हम लोग। Capital Asset Pricing Model, CAPM. This model is used for calculating required rate of return for equity. This model assume that unsystemic risk
is equivalent to 0. Hence, only left is systemic risk. देखिए यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए. Is everybody comfortable with this? Till this? Yes, sir. ठीक. And this model also assumes that market is best investment from risk and return perspective. यानी this is these two assumptions. What it means. So let's assume जो आपका FD रेट था वो 10% था और आपका जो मार्केट है स्टॉक मार्केट RM लिख रहा हूँ स्टॉक मार्केट से एवरेज रिटर्न 15% है. इसमें रिस्क फ्री कितना हो गया 10%. जब आपने FD ब्रेक करके मेरी कंपनी में पैसा डालोगे इक्विटी में तो आप जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसका भी हिट आपको लगेगा सिस्टमिक रिस्क का. हाँ या ना. तो मार्केट जो सिस्टमिक रिस्क है वो भी कैलकुलेट होगा अलग से. करेक्ट. बट सिस्टमिक रिस्क के अंदर ही जो मार्केट से फ्लक्चुएशन आप पे आती है जो मार्केट की वोलेटिलिटी से जो आप पे इम्पैक्ट आता है उसी को सिस्टमिक रिस्क बोलते हैं. तो सर उसका भी अलग से कैलकुलेशन होता है. हाँ अभी सिखा रहा हूँ वही. या वो कर रहे हैं अभी वही कर रहे हैं. सो देन माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा. माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर CFA मॉडल इज RM minus RF into beta. ये फॉर्मूला हो जाता है एज पर CFA. RF is your risk free rate of return. RM is market return and beta तो मैंने आपको बताया ये major systemic risk and RQ is a required rate of return as per CAPM. हाँ जी कोई डाउट है तो पूछिए इसमें. सर ये जो मार्केट रिटर्न है ये क्या बोलते हैं इसको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और इसका रिक्वायर्ड रिटर्न एडिशन होता है दोनों का ये एक्सपेक्टेड. नहीं. सो जैसे अगर स्टॉक मार्केट आपको 15% रिटर्न दे रही है तो उस 15% रिटर्न में रिस्क फ्री ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना. यस सर. तो मैंने ऑलरेडी अगर रिस्क फ्री एक बार ऐड कर दिया है यहाँ पे रिस्क फ्री मैंने ऑलरेडी एक बार ऐड कर दिया है तो दोबारा अगर इस RM के अंदर ही RF इंक्लूडेड है तो मैंने अगर एक बार ऐड कर दिया दोबारा माइनस करना पड़ेगा ना उसको ठीक करने डबल काउंटिंग हो जाएगी. ओके. इनटू बीटा.
Yeah. तो फिर हम सीधा RM से ही ना कैलकुलेट कर ले, RM into beta if we are doing this. नहीं बट मुझे ये पता लगाना है कि वो RM में रिस्क फ्री कितना है और रिस्क फ्री के अलावा कितना है. रिस्क फ्री के अलावा उसी पे बीटा मल्टीप्लाई होगा ना. अगर मैं पूरा RM पे बीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे देखो, जैसे मैंने आपको बताया RM में दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिस्क फ्री है एंड अदर है. तो जो बीटा है वो सिर्फ अदर पे लगाना है ना, इसलिए उसमें RF माइनस किया हुआ पहले. Understood? But I'm asking if we just calculate RM into beta तो हमारा वो अदर नहीं निकलेगा. Is it the reason that we are calculating Yes, अलग-अलग? yes. You're right. And the market risk and market rate of return are same. Sorry, come again. ये जो RM is again the market risk and also market return, both ways. Or am I confusing myself? नहीं, मार्केट रिस्क को मत लेकर आओ, ये मार्केट रिटर्न है कि मार्केट ने कितना रिटर्न दिया आपको, स्टॉक मार्केट ने ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न दिया आपको, वो है ये. Okay. मार्केट रिस्क से आपके स्टॉक में कितनी, मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से आपके स्टॉक में क्या फ्लक्चुएशन आएगा वो बीटा है. थोड़ा सा हैवी है ये, प्रॉब्ली यू नीड टू एब्जॉर्ब एंड प्रॉब्ली फिर ऐसे थोड़ा सा फिर नेक्स्ट टाइम और रिवाइज करूंगा तब थोड़ा एब्जॉर्ब होगा. जनरली फर्स्ट एक बार में इतना एब्जॉर्ब नहीं होता. तो simple RM is market return, not market risk. Beta is measuring if there is a fluctuation in the stock market, because of that fluctuation in stock market, what is the impact on your own stock is measured by beta. ठीक है आकांक्षा. So don't worry. So I'm not saying कि आपको आज 100% absorb हो जाएगा ये और 100% you might not have doubt. ऐसा नहीं बोल रहा. It's okay. Probably you will probably revise in the coming week and probably in case you have any question you can take that. But it will take some time, especially if you're not from this background, for you to get this settled down completely. सर Yeah, Anjali. सर मुझे ये पूछना था, ये जो RM माइनस RF इंटू बीटा हम लोग कर रहे हैं, तो ये तो रिस्क प्रीमियम हो गया. Correct. और ये बीटा का कुछ वैल्यू होता है क्या, और वी टेक इट एज कांस्टेंट, और कुछ वैसा वैल्यू कैलकुलेटेड रहता है, वो कंसीडर करना होता है? वैल्यू होगा एक मैथमेटिकल वैल्यू होगा. नहीं, मैथमेटिकल वैल्यू तो होगा, वो मतलब वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो वी गेट इट फ्रॉम फॉर कैलकुलेशन. गिवन होता है सॉफ्टवेयर में, और मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा. ये जनरली गिवन होता है, हमें आसानी से रेडिली सॉफ्टवेयर में मिल जाता है. बट फ्रॉम दिस प्रोग्राम पर्सपेक्टिव आपको तो हम सॉफ्टवेयर में नहीं, हमें तो कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए. दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. So basically beta जो है it's actually figuring out whatever risk the market is giving with the risk the company is facing. Is it something like that? करेक्ट. इट इज बीटा इज टेलिंग यू कि आपके स्टॉक पे मार्केट की वजह से कितना रिस्क आ रहा है, वो बताता है. So let me explain this to you in a more easy way. So for example, Akansha, if you're driving a car, okay, so your car might get a scratch because of two reasons. One,
if it's by your own mistake, आप ठीक से नहीं चला रहे हो, स्क्रैच आ जाए, और एक सेकंड सिनेरियो है कि आप ठीक से चला रहे हो बट कोई और ठीक से नहीं चला रहा, उसकी वजह से स्क्रैच आ जाए। तो ये बीटा क्या बता रहा है कि जो आपके इन्वायरमेंट में जो रिस्क है, आपकी गलती नहीं है, जो इन्वायरमेंट में जो रिस्क है उसकी वजह से आप पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो बता रहा है बीटा। क्लियर है? Yes, yes. ठीक है। हाँ जी, अंजनी, ईशा, कोई डाउट यहाँ तक? सर क्लियर। नो सर। ठीक है। सो मैंने आज ये दो क्लोज किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। आई एम जस्ट कॉन्शियस थोड़ा सा मैथमेटिकल साइड पे, इट विल टेक सम टाइम। सो ये जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, इसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रखूंगा। आई जस्ट वांट यू टू फर्स्ट सेटल डाउन विद द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, बिफोर वी गो टू द अनदर पेंडोरा बॉक्स व्हिच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो इसको अब्सॉर्ब करिए, ठीक है। जस्ट इफ स्मॉल रिक्वेस्ट, जस्ट ड्यूरिंग द कमिंग वीक ट्राई एंड गो थ्रू दिस both cost of debt and cost of equity at your convenience, and try and see if you're able to get hang of it. If yes, then okay. If no, probably note down your queries and we can discuss in the next class before we move further. ये दो तीन टॉपिक्स हैं जो थोड़े हेवी होंगे, so we'll probably do a very small part of it and slowly so that we can create this, we can get these small pieces and get it good to create the big picture out of this. Evaluation के बहुत important concepts हैं, और 100%, मैं 99% में नहीं कह रहा, 100% अगर evaluation related इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे आपको टेस्ट किया जाएगा इन टॉपिक्स पे। Sir, I had this question. Go ahead. So this discounted cash flow model, इसमें ही सर ये सब included है, or is it Correct. another part? नो, उसी का पार्ट है। तो मैंने अभी डीसीएफ में आपको डीसीएफ के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो करा रहा हूँ। जब ये सब हम कर लेंगे तो डीसीएफ में कैसे यूज करते हैं, कैसे डीसीएफ कैलकुलेशन है, वो सब बताऊंगा। तो मैं डीसीएफ के इंडिविजुअल पार्ट्स करा रहा हूँ जो हमें यूज करने हैं, वो क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, बिफोर वी गो टू बिगर कैलकुलेशन। Okay, okay. ठीक है, एनीथिंग एल्स? No, sir. ठीक है, सो आप प्लीज ये रिवाइज करना एंड देन विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, चलिए, थैंक्स। ओके सर, थैंक यू।